Hello everyone. So today in this video we will be looking at CDS examination 2022. So before we look into the content, मैं आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए because this channel will keep you updated about latest job advertisements. So let's move to the content. So what is CDS? CDS stands for Combined Defense Services. अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इन ऑफिसर्स पोस्ट तो आपको CDS का एग्जाम क्लियर करना होगा. This CDS examination is conducted by the Union Public Service Commission twice every year. Coming to important dates, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 23 दिसंबर 2021 onwards and the last date for online application is 11 January 2022 till 6 p.m. You can withdraw your applications from 18 January 2022 to 24 January 2022 till 6 p.m. And the date for examination will be 10th April 2022. इस दिए गए वेबसाइट में आपको जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना होगा. Coming to the eligibility criteria. As for the nationality, a candidate must either be a citizen of India or a subject of Nepal. Or if you are a person of Indian origin who has migrated from the countries mentioned here with the intention of permanently settling in India, then you can also apply for the examination. But if you are a subject of Nepal or if you are a person of Indian origin, then you must possess a certificate of eligibility issued by the government of India. However, in the case of Gorkha subjects of Nepal, they do not need certificate of eligibility. Coming to age limits, sex and marital status. इंडियन मिलिट्री एकेडमी कोर्स में आपको अप्लाई करने के लिए यू मस्ट बी अनमैरिड एंड यू मस्ट नॉट बी बोर्न बिफोर 2nd January 1999 and not after 1st January 2004. In case of Indian Naval Academy, again you must be unmarried and you should not be born before 2nd January 1999 and not after 1st January 2003. In case of Indian Air Force Academy, you must again be unmarried and you should not be born before 2nd January 1999 and not after 1st January 2003. In the Officers Training Academy, the males must be unmarried and should not be born before 2nd January 1998 and not after 1st January 2004. The birth date criteria is same for the females also. As for the females, for the Officers Training Academy course, unmarried, widows who have not remarried and divorcees, they can apply for the examination. Candidates below 25 years of age must be unmarried और ट्रेनिंग के दौरान आप शादी नहीं कर सकते. और अगर आप मैरिड हो और 25 इयर्स से ज़्यादा एज के हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो. Coming to the educational qualifications. For admission into Indian military academies and officers training academies, you must possess a degree of a recognized university. In case of Indian Naval Academy, you should possess degree in engineering from a recognized university. And in case of Air Force Academy, you must have a degree of a recognized university with physics and mathematics at class 12 or you should have a bachelor's in engineering. और जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं आप भी अप्लाई कर सकते हो बट देयर शुड नॉट बी ए बैक पेपर जिसका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है. Now information for candidates in services.
अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, परमानेंट हो या टेम्परेरी, यू विल हैव टू इन्फॉर्म योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन राइटिंग कि आप CDS एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो। सेम फॉर कैंडिडेट सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, आपको अपना कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। Such candidates must submit no objection certificate at the time of interview, and if your head of department or commanding officer withholds his or her permission, then the application of that candidate will be rejected. Coming to fees, women, SCs, STs को fee नहीं देना होगा, and those candidates who have to pay fee, they must pay ₹200। अगर आप कैश से पे करते हो तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डिपॉजिट करना होगा। आप नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। एनी अदर मोड विच इज नॉट मेंशन्ड हियर इज नॉट वैलिड, नाइदर एक्सेप्टेबल। कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 341, जिसे अलग अलग कोर्सेस में डिवाइड किया गया है। इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देयर आर 100 वैकेंसीज। इन द इंडियन नेवल एकेडमी देयर आर 22 वैकेंसीज। इन द एयरफोर्स एकेडमी देयर आर 32 वैकेंसीज। इन द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी फॉर मैन देयर आर 170 वैकेंसीज, एंड फॉर वीमेन देयर आर 17 वैकेंसीज। सो द टोटल वैकेंसी इज 341। Coming to the scheme of examination, the competitive examination comprises of two types: one written examination and then interview for intelligence and personality test. Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Indian Air Force Academy. In these three, written examinations will be for total 300 marks. English 100, General Knowledge 100, Elementary Mathematics 100. For admission to Officers Training Academy, the total marks will be 200, English 100, General Knowledge 100. Time limit for each paper will be 2 hours, and there will be negative marking also. एक गलत आंसर के लिए 0.33 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। So after the completion of application process, the eligible candidates, they will get their e-admit card in the UPSC website mentioned here. They will get the admit card 3 weeks before the commencement of the examination. And if you do not receive your e-admit card, then you must contact the commission. So that's it with the video. For any more details, the link for the PDF has been given below. Also, link for previous year question paper has been given below. So I hope the video was informative for you guys. For any kind of queries, you can write to us in the comment section. And once again, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टिल देन, टेक केयर।